It's already 30 minutes. We are already late. So, okay. So we yesterday started with object-oriented programming. Right? Yesterday we started with object-oriented programming. So we saw some of the examples which are related to, uh, you know, some examples related to this classes and definitions like functions. जिसमें we saw how to define a class, like कैसे class create करना है, and how to add the functions inside a class. Right? So whenever you add these columns and add enter, right? If you add enter, so it from this line the another like you can add multiple things. Yeah. This line can. If this class comes here, then this is not a this method is not a part of this class. ठीक है anyway it is showing some expected indentation block. ठीक है तो इस तरीके से ये होगा. So first what we do is we define a class like saying class and we write a class with a capital first letter. ठीक है and it has to be a single word. If you can see it is a single entity. ठीक है ऐसे नहीं कि कार स्पेस दे दिया है स्पेस नहीं अंडरस्कोर है कार स्पेस मैन्युफैक्चर कुछ ऐसा नहीं चलेगा. You have to define in a single word. Then we know how to define what function. So function can be like using def. You can create a function. So here its name. Then self is used to bind. So self. If you don't write self in any of the method, it will not bind to each other and a class. Okay? And a class. So that is why self is also necessary a parameter, and otherwise except self you can add multiple parameters also, so that we will look today. Okay? And whatever code you write here you can write based on those parameters. Okay? That also we will look today. Then another thing we have seen is how to call a function. Functions पहले कैसे कॉल करा जाता था जैसे if I wanted to class call a engine I would directly say engine and add some values if there are required. ठीक है so here first you have to make a call to this car manufacturer, right? And then after that you need to make a call to one second. Hello. I think the voice was not clear. Now it may be clear. If the voice is okay, please type yes, guys. If the voice is better than previous, type yes. Okay, cool. So yeah, I was saying, see how to make a call to engine now. Okay. So first I would directly like previously I would directly write engine and it would call this self and it would give me whatever the code inside. But now first I need to call a company, whatever the company I or whatever the class I created, and then from that class I can go to engine or I can go to wheels or I can go to body. Okay. So this is how the new routing is. This is the route. Okay. This is the route. So now you can also so this is the second same similar example that we have seen, right? Similar example में uh, similar example में हमने क्या देखा नेट बैंकिंग में यूजर डेटा transaction and payment. So if I want to so first thing is I can directly call like this net banking dot user data, but it is ideal that you store some like you take a object or take a variable and store whatever data in the net banking is. Okay, and using that variable you can call a function. Okay, so ये बस variable मैंने generate कर like लिखा है. I can write anything net bank object, a net banking object or only net banking equals to net banking. Like इसको मैंने बस
इक्वल्स टू कर इसकी सारी वैल्यूज इसमें स्टोर कर दी एंड देन गोइंग अहेड व्हाट आई हैव डिड इज यूज्ड दिस टू कॉल यूजर डिटेल्स ठीक है एंड आई गॉट द these डेटा लाइक यूजर डिटेल्स में जो भी डेटा था वो सारा मुझे यहाँ पर मिल गया ठीक है everything that I have got here then I can see then I can see we have also seen this pillars of oops ठीक है pillars of object oriented programming so this is also very important guys because this definitely will get asked ठीक है so the first pillar is encapsulation or you can say inheritance is one of the easiest so we will start with any inheritance then polymorphism abstraction ठीक है तो ये चार चीजें हैं that are there in the object oriented programming ठीक है object oriented programming this again this inheritance also have a two types ठीक है one is multiple and another is multi-level ठीक है multi-level so we will also see this today try to cover it as quickly as possible and then I was expecting this question from you the self so whatever whenever we write self why this is used to bind a functions with each other bind a function with each other and a class okay and a class like this so I hope this is clear yesterday's class is clear if yesterday's class was is clear and there is no doubt type yes in the comments or type move move means चलो आगे चलो आगे बढ़ो so type move if you wish to go ahead otherwise if there is any question we can discuss it yeah. move सही है चलो ठीक है so see let me just create a again a class अभी इसके बाद हम क्लास ज्यादा क्रिएट करेंगे ठीक है इसके बाद हम क्लास ज्यादा क्रिएट करेंगे तो इफ आई से क्लास इक्वल्स टू मैथमेटिक्स ठीक है मैंने क्या कर दिया क्लास इक्वल्स टू मैथमेटिक्स कर दिया तो क्लास इक्वल्स टू मैथमेटिक्स इसके अंदर आई वुड टेक let's say first method is called numbers ठीक है first method is called numbers जिसमें I have passed self comma a equals to 1 b equals to 2 ठीक है और मैंने कह दिया कि प्रिंट a प्लस b ठीक है और इसके पहले लेट मी जस्ट ऐड वन थिंग दैट इज सेज numbers are ठीक है एडिशन ऑफ नंबर्स आर ठीक है इस तरीके से मैंने बोल दिया ठीक है so what it will do we have learned this definition like method right इसमें क्या होगा कि जो भी नंबर अभी these are default variables right these are default variables so इसका वैल्यू आएगा a plus b that is 3 ठीक है so addition of numbers are 3 so we have seen this okay then another method I would like to define as let's say that of इसको एडिशन कर देता हूँ ठीक है इसको एडिशन बोलते हैं एडिशन फिर यहाँ पर मैं बोलता हूँ सब्सट्रैक्शन subtract equals to a comma b so instead of a comma b I would like to add here let's say I comma j okay, I comma j and I want to say I comma j okay, I comma j so what will happen here okay, these are positional variables right? These are positional so whatever value I will pass in the subtract those value will go come here and it will do the operation so operation हमने define नहीं किया so it will do the operation 1 I minus j ठीक है so whatever the value we pass that values will be accepted here ठीक है and then I will again create a class which is called as let's say
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन में डिफॉल्ट वेरिएबल्स है, सब्ट्रैक्शन में पोजिशनल वेरिएबल्स है, एड मल्टीप्लिकेशन में भी पोजिशनल वेरिएबल्स। तो आई होप एवरीवन हैज इस प्रैक्टिसिंग, ठीक है। इसमें हमने पोजिशनल वेरिएबल्स, इसमें भी पोजिशनल डिफॉल्ट, आर्बिट्ररी एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। so you must understand these, ठीक है। एंड इन द डेफिनेशन, हाउ टू क्रिएट अ डेफिनेशन और मेथड, ये इसमें सीखा है 2.1, ठीक है। 2.11 टू 2.2.1 इनमें भी सीखा है, इसमें भी सीखा है। so go and check out the videos and notes on the GitHub, ठीक है। so let me just run this class, ठीक है, इसको मैंने रन करता है। so now if I want to call addition, इसको अगर मुझे कॉल करना है, I want to call addition, so what I will do, how will I do, I will say first I can say like this, uh, mathematics dot addition, ऐसे बोल दिया मैंने। so I will get a I will get the addition as 30, ठीक है। so again if you are saying कि अरे यार यहाँ पे तो a and b है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 आने वाला था, आपने तो यहाँ पे 30 कर दिया। तो वी ऑल नो जो भी डिफॉल्ट वेरिएबल्स है, अगर इफ आई पास अ न्यू वैल्यूज इट ओवरराइट, ठीक है, ओवरराइट। तो जो 3 था वो 30 हो गया। इफ आई डोंट पास दिस, so I will get the ये वैल्यू, इनका वैल्यू। if I pass something like 4,5 4,6, it will overwrite, ठीक है, ये ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पर। so how this call has been made, first मैथमेटिक्स को गया, ठीक है, देन मैथमेटिक्स से एडिशन को गया, एडिशन में ये वैल्यूज ऐड होगी, 4 यहाँ पर चले गया, 6 यहाँ पर चले गया, देन ये यहाँ पर आ गई ये वैल्यूज। तो 4 प्लस 6 वी गॉट 10 एज अ आउटपुट, ठीक है, 10 एज अ आउटपुट। so this is clear, right? So you can also call like this, इसमें you can say मैथ, अभी मुझे मैथमेटिक्स हर बार मैं लिखूंगा नहीं, so what I can say, मैथ्स में मैंने मैथमेटिक्स को स्टोर कर दिया एंड आई सेड मैथ डॉट एडिशन ऑफ 10 प्लस 2, तो ये ऑपरेशन चल जाएगा, ठीक है। so the आंसर विल बी एडिशन ऑफ नंबर्स, एडिशन ऑफ नंबर्स आर 30, ठीक है, 30 टू 10 प्लस 20, ठीक है, 10 प्लस 20। Additionally, I can, if I want to call this subtraction, okay, if I want to call this subtraction, I will simply say math dot subtraction of 20 comma 10, ठीक है, 20 comma 10। तो यहाँ पर जो ये 20 है, this 20 will go here, I में जाएगा, 10 जाएगा J में, फिर 20 से 10 माइनस होगा, आंसर विल बी 10, ठीक है, 20 से 10 माइनस होगा, आंसर विल बी 10। So this is the answer, right? The subtraction of numbers are 10. Okay. So now similarly, मुझे multiplication का कौन बताएगा? Who will tell me the multiplication का? Multiplication का आंसर मुझे निकालना है, मेरे को आंसर बताओ। मल्टीप्लिकेशन का आंसर बताओ। 1 मिनट है गाइस आपका। He says math without multiplication 10 into नहीं, into नहीं, math without multiplication 3,5, this is right, ठीक है। This is why not right, I will tell you. So first thing is ये m कैपिटल हो गया, ठीक है, तो इसको चाहिए हमें स्मॉल, then the rest is right, this multiplication, फिर स्पेस नहीं चाहिए, and if you can see हमें यहाँ पर वैल्यू पास करनी, बाकी ऑपरेशन दैट वी हैव ऑलरेडी सेट अप, ठीक है। so we just have to pass a variable like 10 comma 20 and the multiplication will be 200, right? so multiplication is 200, yeah. So this is also right,
This is also right. This is like this is not right. Okay. Why this is not right? Why this is not right? So if I run this first, तो ये मैथ का n कैपिटल है, यहाँ पर स्पेस है, एंड सेकंड हमने ये मैथमेटिक्स जो है इसको मैथ में स्टोर, we have stored this mathematics. So whenever you see this parenthesis, this is called as either function or a class. ठीक है, ये this is like a crown. ये बस क्लास के ऊपर रहेगा या मेथड्स के ऊपर रहेगा. You can pass something here, but you have stored this mathematics. इसका सारा पावर इसके अंदर स्टोर कर दिया. नाउ यू डोंट नीड टू यूज दिस वन, तो यू डोंट नीड टू यूज दिस. ठीक है, यहाँ पर स्पेस भी नहीं रहेगा, यहाँ पर भी स्पेस नहीं रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहेगा. सो दैट इज व्हाई दिस विल नॉट वर्क. ठीक है, इफ आई रन दिस आई विल डेफिनेटली गेट सम एरर. ठीक है, सो आई एम डिलीटिंग दिस. तो सही है, लाइक यू आर समवट अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक ठीक है ठीक है. तो व्हाट इफ व्हाट इफ अभी ये चीज बताओ. ठीक है, अभी मैं इसको मैथ के जगह कैल्स में स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कैल्स डॉट एडिशन, and if I don't pass anything, so what will be the answer? ठीक है, कैल्स डॉट एडिशन, कैल्स यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर भेज रहा हूँ मैं. and if I don't pass anything, what will be the answer? ठीक है, आंसर क्या रहेगा क्विकली बताओ. आपके पास है 30 सेकेंड. ओके, किसी ने ऑलरेडी बता दिया. 3 3 3 cool. Okay, let's try it. Okay, 3 is done. ठीक है, so now I will similarly do calc dot multiplication, and I am not passing anything. So what will be the answer here? Quickly. What will be the answer? इसका आंसर क्या रहेगा? एरर. क्लास कैल्स क्या है? ये कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन को मैंने कैल्स नाम से डिफाइन कर दिया. So this is a variable, we can set any, इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ. मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई सूरज. ठीक है, सूरज में मैंने सेव कर दिया. I can say anything. ठीक है, I can say anything means basically what I am doing this class जो है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ. दिस इज जस्ट अ वेरिएबल. नाउ आई एम यूजिंग दैट वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, आई कुड हैव यूज्ड लाइक दिस आल्सो. जैसे इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, मैथमेटिक्स डॉट एडिशन, मैथमेटिक्स डॉट सब्ट्रैक्शन एंड मैथमेटिक्स डॉट मल्टीप्लिकेशन. इसमें क्या हो रहा है, आई एम डायरेक्टली यूजिंग दिस क्लास नेम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन इज ये क्लास नेम बहुत बड़ा रहेगा गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम. So some like we set up a class name like get a groovy expression from. ठीक है, ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा क्लास नेम है. तो व्हाट इज आइडियल इज हर बार ये मल्टीप्लिकेशन में आप बहुत बड़ा क्लास नेम यू कैन नॉट यूज. सो व्हाट यू यूज हियर, यू यूज जस्ट सिंपली कैल्स नाम से एक सेव कर लिया, और ये छोटा है राइट, इसको यू कैन यूज इट कहीं पे भी. सो इट इज दिस एंड दिस इज सिमिलर. ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर लो अगर क्लास का नेम छोटा रहा तो. ठीक है, और यू कैन स्टोर इट हियर. ठीक है, so another answer that I was expecting is 2 is the wrong, error is right, error is right. ठीक है, so if I don't pass any variable here, तो मैं फिर से यहाँ से उठाकर यहाँ पर डाल. So now what I was asking is calc dot multiplication. So calc यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन पर आएगा. मल्टीप्लिकेशन पे it is expecting that some 2 variables, right? And we have not passed any variable here, so we should have passed something, otherwise it will give us an error, right? Here why error not we got, because we have already like यहाँ पर we have not set up anything, right? यहाँ पर why we have not got any error, because we have set up a default variable, but here we don't have default variable, we have
what? Positional variable. Positional variable. ठीक है. So if I run this, I will get an error. ठीक है. So what is the right here? I should have passed some value. ठीक है. I should have passed some value. तो अभी तो ऐसे ही रखो so that you can understand. Values should be passed in the function. ठीक है. Value should be passed in the function. For you to understand. ठीक है. So ये तो चल जाएगा directly. And this is also, so this is also something that you can do. This is also something you can do. ठीक है. यहाँ पर बस हमने इसको मैथ्स में स्टोर करा है. This is also something you can do. मैथ्स में यहाँ पे कैल्स में यहाँ पे स्टोर करा है. ठीक है. ठीक है. So now one more thing that can be done. तो मैं इसको उठाता हूँ पूरा. ठीक है. तो अभी सेल्फ का एक जादू है. ठीक है. सेल्फ का एक जादू है. So instead of this multiplication, if I write, इसको मैं हटा दिया. Now if I say self dot x, या self dot a, ठीक है, into self dot b. ठीक है. self dot a, self dot b. So what I have done, मैंने बस बोल दिया कि मेरे पास x, y वेरिएबल्स थे. ठीक है. तो a b भी ले सकते, कुछ भी ले सकते. So what I have done, I have said self dot a, self dot b. ठीक है. सिंपल है. मैंने कुछ नया नहीं करा. मैंने बस बोला कि ये जो सेल्फ है डॉट ए कर लो, सेल्फ डॉट बी कर लो. मतलब यहाँ पर इस बीच में जहाँ पर ए की एंड बी की वैल्यू रहेगी, इट विल टेक, so it will now consider a as 1, b as 2. So a as 1, b as 2. So if I run this one, if I say math equals to mathematics, and if I say math dot multiplication, or if I don't pass anything. Okay. If I don't pass, previously I was not passing anything in the multiplication. It gives me error, but now it should not. Actually, सेल्फ से तो उठाया है. वन सेकेंड. ओके. यहाँ पर भी वी हैव टू डिफाइन self a equals to a, self b equals to b. So now it will take the reference. So basically you have to define like this. कहीं पे तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने कहा सेल्फ a equals to a, सेल्फ b equals to b. So what will happen is now you can use these value anywhere in the entire function. ठीक है. यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ पर भी लिख लो, it will catch the value. If I run this now, you can see. और यार क्यों नहीं आ रहा है, अभी तो आना चाहिए. Multiplication. Let's debug. Mathematics object has no attribute a. That line multiplication dot self. Yes, any suggestion? What if we define the class after a class name? What if we define after a class name? नहीं समझा. इसको ही यूज करने चल रहे हो क्या? Like this. Mathematics dot अच्छा क्लास लाइन वैसे. ओके. Is giving us an error. A comma b, self a into self b.
अभी के लिए तो इट इज getting this, but why it is going? So it should have worked, guys. Like literally, it should have worked. ये फंक्शन एक है. ठीक है. So what I have done here, hmm, यहाँ पर ये वैल्यू भी आनी चाहिए. Okay. See, average. Any suggestion? Continue class mathematics. ये ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते. We cannot define. We can define in another way. इस यहाँ पर भी जाएंगे कि एक there is a new function which is called as init function. ठीक है. Init function. Init function. So that we will learn. So उसमें we can define these values. ठीक है. We can define these values. So let's take another example of simple math. ठीक है. Simple math में what we have taken is first is numbers जिसमें ABC ले लिया and then we have defined ABC equals A, self of A equals to A, self of B equals to B, self of C equals to C, and I've said print ABC. ठीक है. Oh, maybe this is because we have defined this uh, default variable, right? Maybe because of this default variable. Let me just try it. So if I say max dot addition 10 comma 20, if I run this now, okay, now this is it. So what is happening here? Just because of I had defined these default variables, it was not directly referring. Yeah. So what I had to done first is maths dot addition. Okay, maths dot addition. So I have to add some value of my own. Okay. It is good that that even I have also discovered one thing here today. So first, what you have to do is you have to you have to first add some of your own values here. So now this 10 and 20 will be added here and here. So we will get 20, 10 and 20 as 30 as output. Again, when you say self dot a self dot b, so these values will come here also. ठीक है. 10 comma 20, that is यहाँ पर 10 आ जाएगा into यहाँ पर 20 आ जाएगा and your answer will be 200. ठीक है. 200. So if you see your answer is 200. ठीक है. Your answer is 200. So again subtraction के लिए कैसे रहेगा? You will simply say maths dot subtraction 20 comma 10 and the similar way you will get the answer. ठीक है. So what changes or what other things that we have learned is is uh, is that you can use self dot a, or like when you define anything like this self dot a self dot b, this becomes kind of a global variable. तो हमने global सीखा था. ठीक है. global सीखा था. तो this global variable we can use it here. तो और एक global कैसे रहेगा like this, जैसे कह लो इसको मैं कह लूंगा globe. ठीक है. globe या globe variable equals to 100 1000. ठीक है. globe variable is equal to 1000. तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे यूज कर सकता हूँ. अरे यार, you have to again say self. ठीक है. You have to again say self. Okay. You have to again say self. तो इससे क्या होगा? यार multiplication will have a difference. See, तो अभी पहले ये 200 था. Now it is 2 lakh because we have multiplied with the global variable. ठीक है. यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया कॉमा सेल्फ ग्लोबल. ठीक है. सेल्फ ग्लोबल. if I run this, तो अभी एडिशन में क्या होगा? एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगी 1000. ठीक है. 1000.
So this is how you can do it. Okay, this is how you can do it. You can either set up a variable globally, can use self global. You can also set up like this self dot a self dot b इक्वल टू वट एवर वैल्यू यू पास. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू पास नहीं करी थी. ये वैल्यू दिस डज नॉट रेफर दिस वैल्यू, यू नीड टू पास सम ऑफ योर ओन वैल्यू. If you have any questions, type in the comments. Directly type in the comments. If there is any question, type in the comments. If there is a question, type in the comments. Type yeah, you can. So, there is no question. Okay, let me just quickly tell you. तो फर्स्ट इज हमने ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल सीखा था. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल सीखा था. उसमें से दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल. You can specify any variable and get a reference using this self. So self is the key. की मतलब ये एक चाबी है जिसको यूज करके यू कैन एक्सेस एनी वेरिएबल, इधर ग्लोबल वेरिएबल और मेथड वेरिएबल. इसको मेथड वेरिएबल बोलेंगे. ठीक है, इसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं, इसको मेथड वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ वेरिएबल. ठीक है, तो इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, इसको कहते हैं मेथड विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. इसको कहते हैं मेथड्स विद पैरामीटर्स. राइट, एंड इसको कहते हैं डिफाइनिंग अ क्लास. इसको कहते हैं मेथड विदाउट पैरामीटर्स. ठीक है, so I have added a notes for you to understand. First, what we have done is class mathematics global एक वेरिएबल मैंने सेट कर लिया that I can use anywhere, here, but the thing is you have to use the self. Self क्या है? This is the key जहाँ पर you can basically use anything anywhere. Now these are instance variables. ठीक है, instance variables, those also you can use anywhere. ठीक है, and then these are like parameters and like everything is there. So everything you can like whatever you want you can do it in this class. So अभी like those who have seen me coding, so कुछ इस तरीके से I write code. ठीक है, most of the time if I want to work on anything I write like this. I create a class. ठीक है, I added methods और definitions. ठीक है, उस डेफिनेशन के अंदर पूरा लॉजिक रहेगा. ठीक है, एंड दैट दो लॉजिक्स विल बी आइदर रेफर्ड लाइक कुछ अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करने हैं तो आई यूज लाइक दिस सेल्फ डॉट टू. ग्लोबल इंस्टेंस वेरिएबल यूज करने हैं तो आई यूज लाइक दिस इंस्टेंस सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट. ठीक है, so mostly you will be coding like this or whatever we have seen or learned here, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होगी. ठीक है, we will try to make these examples more difficult for you, जिससे यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड. तो द फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो यू आर सेइंग दिस, इज देयर एनी क्वेश्चन? तो इसको कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं. ओके, जो विच वन इज राइट, सेल्फ डॉट 10 इंटू सेल्फ डॉट 20. बट ये कहाँ पर यूज कर रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट है. ठीक है, वेयर आर यू यूजिंग दिस, दैट मैटर. ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू. तो दिस इज एक्चुअली आइदर ऑफ दिस इज नॉट, दिस इज राइट. ठीक है, अगर मैं सिंपली इसको चला दूँ तो ये 200 मुझे आंसर दे देगा. लेकिन इफ आई रन दिस वन इट विल नॉट गिव मी एनीथिंग, इट विल गिव मी एन एरर. तो अगर मैं इसको यहाँ पर भी चला दूँ के अंदर सही, even though it will give me an error. ठीक है, self dot 10 self dot 20. let's see subtraction में क्या होगा. ये तो यहाँ पर ही एरर बता रहा है. so this is actually not right. ये ऐसा कुछ होता ही नहीं. self 10 self 20. ठीक है, if I run this देखो see I get an error.
ऐसे कुछ होता ही नहीं, सेल्फ 10 सेल्फ 20 कुछ होता ही नहीं। तो वाई, व्हाट इज दिस, फर्स्ट लेट मी टेल यू। तो जो भी वेरिएबल्स आप करेंगे ये यहाँ पर छोड़ दो, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आई एम सेइंग सेल्फ डॉट आई सेल्फ डॉट सी, ठीक है। वेर एवर देर आर पैरामीटर्स इन द मेथड, इन द मेथड this is right, like इसको we can refer this as right. How? So this will basically whatever parameters you add, it will take a reference of it. So now self dot I equals to some value, self dot A is equals to some value. Basically self dot A or I or whatever variable is some value. Self dot value is a wrong. Okay. Self dot some variable is equals to some value is right. ठीक है। तो द थिंग दैट, लाइक जो चीज समझनी है वो ये है कि ये सेल्फ बस एक की है, ठीक है। सेल्फ बस एक की है, उसके सामने कुछ वेरिएबल होना चाहिए। सेल्फ डॉट आई देयर शुड बी सम वेरिएबल। यहाँ पर कुछ वेरिएबल नहीं है सेल्फ के सामने, पर कुछ वेरिएबल नहीं, सेल्फ डॉट 10 हो गया, तो देयर इज नो वेरिएबल हियर, so there has to be some variable, okay, so that is why this is not right, this is right। 10 into 12 20, ये तो हमने मैथ में सीखा, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड। ठीक है, मूविंग अहेड। So now let's understand क्लास कंस्ट्रक्टर फॉर, ठीक है। क्लास कंस्ट्रक्टर, जिसको क्लास कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज क्लास कंस्ट्रक्टर? तो क्लास कंस्ट्रक्टर वो होता है, this is called as class constructor. Is a constructor in Python and it is used to initialize the instance variable of the class, and it is called when the object of the class is created, it can take argument and it can also write, ठीक है। So these are the notes जो आपको समझनी है, ठीक है। So the very first thing is, ये बस मैं लिख देता हूँ and then we will talk, बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ then we will talk, ठीक है। So the example is let's create a class called as, let's say, college, ठीक है। कॉलेज नाम से I have created a class, ठीक है। उसमें I have said def init, इसको मैं राइट कर देता हूँ, def init in it, and I have said self name dot location, और ये पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने? सेल्फ डेफ इनिट, इनिट नाम से मैंने एक एक मेथड लिख दी, ठीक है। सो दिस मेथड कैन बी रिटर्न ओनली जस्ट आफ्टर अ क्लास, ठीक है। क्लास के जस्ट आफ्टर लिख देना, वेयर यू कैन डिफाइन दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये मेथड इसके साथ रन हो जाएगी, ठीक है। तो इनिट इज अ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, तो इसको इनिट को कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, टेक्निकल टर्म जस्ट कंस्ट्रक्टर बोला जाता है, दैट्स इट। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल इन द क्लास, ठीक है। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल वी वर लुकिंग दिस, so this is not a ideal way to write, this is not a ideal way to write, you can initiate the variables in the init function, वैसे वो भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। that will also work, this will also work, but this is a more right way to write, okay, right way to
right? So what I have said, def init self name location. तो क्लास कॉलेज में स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, लोकेशन होती है, ठीक है। तो आई हैव सेड कॉलेज नेम, कॉलेज का नाम है, कॉलेज का लोकेशन है, ठीक है। So is what I have said here is कि init में जो भी वेरिएबल्स है, init में उसको इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज मीन्स whenever this class is called, if these values has been initialized, अभी now you can use these values anywhere in your entire code, ठीक है। अभी इसके नीचे जितना भी आप ये क्रिएट करोगे, you don't have to mention these variables, ये वेरिएबल इसके अंदर मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, you can directly use, ठीक है। यहाँ पर या नीचे कहीं पे भी कितने भी मेथड्स आप जनरेट करो नीचे, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस, ठीक है। बेसिकली ये जो है, इसमें और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये सिंपल चीज हम कहीं पे भी यूज कर रहे थे, ये चीजें हम कहीं पे भी यूज कर रहे थे, बस मैंने बस एक राइट वे दे दिया आपको। तो इफ यू हैव सम वेरिएबल which needs to be inherited छोड़ दो, which needs to use in the different methods also, reuse, ठीक है। reuse करना है तो you can use like this, ठीक है। So if I run this and now if I call, so first thing कैसे call करनी होगा, so I will say let's say clg equals to college, ठीक है, college, और इसमें मुझे कॉलेज का नाम देना होगा, लेट्स से MIT इज द कॉलेज नेम एंड लोकेशन इज स्कूल, लोकेशन स्कूल। तो यहाँ पर हमने कुछ नया देखा, क्या देखा नया, कि whenever you define init function you need to pass a variable, जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करोगे you need to pass those variables inside a class, ठीक है, inside a class। so this is this is the this is the way, ठीक है। ये चेंज है सिंपल, ठीक है। now if I say college dot display I will get the names, college name equals to MIT, college location equals to Pune, ठीक है। कॉलेज नेम इक्वल्स टू MIT, कॉलेज नेम इक्वल्स टू पुणे। सिंपल है, सिंपल है। एवरीवन गेटिंग दिस, एवरीवन गेटिंग दिस, इफ यू आर गेटिंग यस यस, इफ यू आर गेटिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट नो, बिकॉज सी अभी कैसे है ये, दिस बिकम्स वन बॉडी, दिस बिकम्स वन बॉडी। जो भी वेरिएबल लाइक ऐसे भी कर सकता था, मतलब रहता है ना, लाइक दैट इक्वल्स टू, मैं कुछ मेथड का नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है, ABC, और फिर उसके अंदर में पैरामीटर्स पास करता हूँ, राइट। क्लास के लिए क्या होता है, क्लास के लिए क्या होता है, यू कैन नॉट पास पैरामीटर्स लाइक दिस, यहाँ पर मैं ऐड करके पास नहीं कर सकता, ठीक है। यू कैन राइट इनिट फंक्शन, इनिट फंक्शन में यू कैन राइट दिस, अभी ये चीजें कहीं पे भी यूज कर सकती, बट you have to pass it whenever you call a college or your class, you need to pass those things इस तरीके से। ठीक है। someone says sir please again, okay, इसको फिर से सीखता है, ठीक है। so now there is a function, there is a class, there is a class called, समझ में तो आ रहा है आपको, but someone so गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। करते हैं जैसे लेट्स से क्या लेना, क्लास क्या लेते हैं, कार ले लेते हैं, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग में इफ आई से डेफ, अभी कार मैन्युफैक्चरिंग में जो भी चीज प्रीवियसली व्हाट यू वी यूज्ड टू राइट, एक सिंपल प्रीवियस एग्जांपल डेफ, इफ आई से इंजन, ठीक है, इंजन इक्वल्स टू इंजन क्रिएटर, ठीक है, एंड उसका मैं वैल्यू डाल देता हूँ इंजन टाइप इक्वल्स टू इंजन टाइप, ठीक है, और यहाँ पर मैं इंजन टाइप रिटर्न कर दे रहा हूँ, राइट। सिंपल है, एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर आई हैव डिफाइंड अ
what this value like engine ka type. So whenever I call this class, what I will write, I will say car object equals to car, and I will say car object dot engine. Okay, car object like this car dot engine, और मैंने डाल दिया engine में V8, right? So if I return this, I will get this output. Engine is created as V8. Okay. So this is the condition जब मुझे ये वैल्यू यूजर से लेनी है. ठीक है, I want to take this value यूजर से. But since I have this car company, ठीक है, I have this car company, तो मेरे पास जो भी इंजन टाइप है, इंजन टाइप है, that I know, ठीक है, that I know. So if you know these variables, now you how you can write this? You will create class equals to car, yeah, and you have said def. You have said def init function self dot engine type because I had this engine value. Okay, I had this engine value, and simply here I said def engine self. Similarly, इसमें और इसमें आप like difference देखो. ठीक है, what is the difference? If I want to take a value from a function, I will write like this. There should not be init function. If I want to pass the value in the class I will initialize using the constructor that is init. ठीक है, init में मैंने क्या करा, self dot engine equals to engine type. ठीक है, now whatever value I pass here in the class, that is this. ठीक है, here you can see. So ये same value will be used anywhere. like यहाँ पर यूज होगी वो, यहाँ पर like आएगी first, then यहाँ से यूज होगी. ठीक है, like this. So now if I say v8 and instead of that I say car object dot engine, यहाँ पर I don't want to have to pass now. Like previously यहाँ पर देख सकते हो, if you wanted to pass here, but now you cannot. You don't really want to pass here because you have already explained like pass here. So if I run this, I will get the same output, right? तो मैं v6 कर देता हूँ. ठीक है, v6. ठीक है, so this is the difference. You either pass directly in the method or you either pass directly in the class. अगर class में pass करना है तो you have to use this init function. Okay. Okay, so this is the difference also that I have given. So if this is clear, type clear in the comments. Right? If this is clear, type clear in the comments. If this is clear, type clear in the comments. अभी आप क्लियर बोलोगे तो आई विल आस्क यू क्वेश्चन. क्लियर? If this is clear, type clear in the comments. Explain again. Good. Clear. Explain again. So let's create one more example. Here I am saying class equals to stock. Okay. So the thing is, if I, so यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से समझते हैं first. ठीक है, so this is your class. ठीक है, this is your class, and this class has your objects और कह लो methods. ठीक है, so these are your functions. functions कौन से, ये क्लास के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं. ठीक है, so there are two types. first जो हमने init सीखा है. ठीक है, init सीखा है. So init is called as initialization. ठीक है, initialization. अभी इस क्लास में ये फंक्शन भी है. ठीक है, इस फंक्शन के अंदर सम वर्किंग है, ऑपरेशन है. ठीक है, सम ऑपरेशन. So for those operations
for those operations, there are some parameters needed, ठीक है, some variables needed. So there is one method that कि इस ऑपरेशन के अंदर ही आप वो वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दो, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी मैंने 2, सो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, डिफॉल्ट का स्पेलिंग देख लो, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू. If I pass that equals to like this, self dot some variable equals to 2, that is called as instance variable, okay, instance variable. So this is also right way, this is also right way, okay. You can again, there is a third method you can define as var equals to 2. This is called as global variable, okay. ये भी यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने का मेथड क्या है, सेल्फ डॉट वैर एंड यूज करो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट है. बट if you want to pass those values directly in the class itself, so you define this init function, जिसमें जिसमें क्या होगा, हम्म, जिसमें क्या होगा, if I will say that in 8, जिसमें अभी नाउ आई एम पासिंग दीज वैल्यू, जो स्टॉक नेम एंड स्टॉक प्राइस है, तो डायरेक्टली मैं क्लास के थ्रू पास कर दूंगा. इफ आई से डिस्प्ले इक्वल्स टू, तो ये चीज है, ठीक है. तो नाउ इफ आई वांट टू पास दीज वैल्यूज, आई विल से स्टॉक, एंड इसके अंदर आई विल पास द स्टॉक नेम इज रिलायंस एंड द प्राइस इज दिस, ठीक है. तो हाँ, दिस इज ऑल्सो यू कैन डू, stocks equals to TCS and stocks equals to SGFC, like this, ठीक है. इस कुछ इस तरीके से you can define different variables that you want, okay. And now if I simply say uh, stocks, इसको मैं मुझे कहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, स्टोर करना होगा, ठीक है, स्टोर करना होगा. तो if I run this, I will get this init object, okay. ये init object है, इसको ओपन करने के लिए फर्स्ट इसको कहीं पे स्टोर करना होगा, लेट्स से ICICI 20, और इसको मैंने कर दिया stk equals to this, and now if I want to call this stk dot display, ठीक है, तो I will get like this, okay, stk dot display. डिस्प्ले में क्या होगा, ये वैल्यू चली जाएगी इसकी जो भी आप डिफाइन करोगे, ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो डू दिस stk dot stock name tfc. Now if you say stk dot size like this, अब ये तीन चीजें अलग लिख देता हूँ. So you can see you can directly change each value also, okay, you can directly change each value also. So here I was directly passing in the stocks, that is class के अंदर मैं directly pass कर रहा था, ठीक है, instead of basically writing like this stock name comma stock price, कुछ इस तरीके से लिखने से अच्छा, मतलब ये इस तरीके से लिख नहीं सकते, बाय द वे ऐसे लिखना रहेगा. अगर लिखा रहता तो ये वेरिएबल ऐसे यहाँ पर जाकर बैठ जाते, राइट. बट दिस इज नॉट working in Python, so that you need to use this init function, okay, init function. Now these values can go here and here, right? So we have seen these four methods. First method क्या है, यहाँ पर दिख रहा है. First है you can use instances. First is you can use default variables, you can default arguments. Second is you can use instance, okay. Third is you can use global, okay. And the fourth is you can use this init, okay. Anyone is preferable, okay, anyone is preferable, okay. So अभी मैं four types of
types of defining variables in Python. So the first in Python में बोल सकते हैं, ठीक है. The first is instance variable, second is class variable, third is static, and fourth is global. It will be लोकल भी है guys, ठीक है. सो इतने वेरिएबल्स हैं जो हम इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, वो सेल्फ डॉट ए डॉट समथिंग. क्लास वेरिएबल होगा इनिट वाला. स्टैटिस्टिक्स वाला मतलब जो डायरेक्टली आप स्टैटिस्टिक्स एंड लोकल आई थिंक एक ही है. इनसाइड अ क्लास इट इज शेयर्ड ऑल द ऑब्जेक्ट इन द क्लास. देन देयर इज अ ग्लोबल जो आप कहीं पे भी यूज सकते हैं. आउटसाइड अ क्लास एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम. एंड देन देयर इज लोकल वेरिएबल विच इज इसको लाइक डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं. ज़्यादा डिफिकल्ट लाइक कंफ्यूज हो जाएगा. So let me just be it here. So read this, understand this. If there is any question, we will discuss again. ठीक है, इसको अलग अलग से फिर से समझा दूंगा. ठीक है. So I wanted to cover some more topics also, but okay, कोई बात नहीं. ठीक है. तो कल पे कुछ कर देंगे इसको 2.1.2 that is inheritance. ठीक है. डॉट आई पी वाई एन बी इनहेरिटेंस कल सीखेंगे. लेट मी जस्ट आस्क यू टू क्रिएट वन दिस एंटायर कोड. एंटायर कोड. ठीक है. फर्स्ट दिस इज क्लियर और नॉट. दिस इज क्लियर और नॉट. if this is clear, type clr. this is clear or not. this one basically ये इस कंस्ट्रक्टर को यूज करना समझ गए हो जाए. लाइक यू कैन चेंज दिस नेम. डिस्प्ले इसको डेफ डॉट डिस्प्ले की जगह डेफ डॉट शो भी कर सकते हो. ठीक है. यू कैन राइट लाइक दिस डेफ डॉट शो और कुछ भी. ठीक है. यू कैन यूज एनी फंक्शन नेम हियर. बट whenever you define this constructor, whenever you define this constructor, you need to use the same word underscore double underscore in it double underscore. ठीक है. So this is a part of this particular defining a class. Yeah, defining a class. मतलब इनिशियली मुझे कुछ ऐसा लिखने की इच्छा थी जैसे कॉलेज इक्वल टू और यहाँ पर मुझे कुछ var1 var2 डालना था. बट पाइथन ने क्या करा, इसको अलाउ नहीं किया. तो द इंस्टेड ऑफ दैट इट सेड ये बोला कि यहाँ पर पास करने से अच्छा है क्या करो, पास द वैल्यूज हियर. एक डेफ नाम से इनिट नाम से फंक्शन बोल दो, उसमें ये वेरिएबल डाल दो और सेल्फ डॉट वेरिएबल बोल दो. ठीक है. इफ आई रन दिस, ये बी कंस्ट्रक्टर भी होता है, ये भी सीखेंगे बाद में. लेकिन ये बहुत यूज नहीं होता है तो इसको स्किप कर देंगे. बट आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर. सो इफ आई नाउ कॉल दिस डिस्प्ले, सो आई विल गेट फर्स्ट इज ये रन होगा ही होगा. ठीक है. ये रन होगा ही होगा. ऑलवेज लाइक कुछ भी कॉल कर लो. इसको भी कॉल, मैंने इसको कॉल किया था. ठीक है. दिस कॉलेज डॉट डिस्प्ले, बट यू कैन सी constructor is also called, constructor is also called, and then this display name is called. Okay. So one more thing that is new learning is here कि whenever you write this constructor, whenever you specify this constructor, कुछ भी कॉल कर लो, this will run, this will get run. ठीक है. this will get run. clear clr 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 clear है clear है clear है clear है clear है great. clear 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 clear. ऑल राइट. लेट मी जस्ट क्विकली अभी यहाँ से थोड़ा सा जो गेम है दैट विल बी गेट टफर. लाइक वैसे तो उप्स कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. इट इज सो मच इजी कि आप लाइक ये बस थेरी थेरी से आप कर सकते हो, समझ सकते हो. ठीक है. बट द थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस. ठीक है. आई एम सेइंग दिस डेली ऑन अ डेली बेसिस. चले जाओ इस
इस पेज पे चले जाओ एंड ठीक है, इस पेज पे चले जाओ, गो टू दिस लाइव सेक्शन, इसको सब्सक्राइब कर दो फर्स्ट, ठीक है, दोज हु आर न्यू, एंड आई एम एडिंग ईच डे, डेली का डेली डाल रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू गो प्रैक्टिस दिस एंड सिमिलरली गिटहब पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अरे ठीक है, गिटहब पे चले जाओ, इस यूआरएल को पकड़कर, ये यूआरएल I always share this in the group, यहाँ पर सारी नोट्स है, गो थ्रू ईच नोट्स, गो थ्रू ईच वीडियो, ठीक है। ईच वीडियो इज, इसके सामने मैंने ये कोड दिया है, ठीक है, वीडियो के अंदर, गो थ्रू दिस, स्टार्ट फ्रॉम डे वन, ठीक है, डे वन कहीं पे रहेगा इसके अंदर, यही डे वन है, डे वन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम डे वन, डे टू, डे थ्री, लाइक दिस, यहाँ पर डे फोर रहेगा कहीं पे, ठीक है। ओवर राइट हुआ है बहुत चीजें, एक ही दिन में, 2 दिन में एक चीज हुई है बहुत बार, तो स्टार्ट कंप्लीटिंग दिस, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, सिंपली इफ यू सिंपली लाइक गो इनसाइड दिस एंड जो भी मैंने लिखा है उसको बस कॉपी करो और आपके जो भी कंपाइलर रहेगा उसके अंदर पेस्ट कर दो, and try to run each and every cell. Okay, try to run each and every cell so that you will get all these things, all these things. Okay, ये दोनों लिंक I will share in the group. Okay. Try to run each thing. Like इसको ऐसा कॉपी कर लो और आपके जो भी ये रहेगा कंपाइलर या फिर कोड इंटरप्रेटर आईडी जो भी रहेगी उसके अंदर बस ऐसे कॉपी एंड पेस्ट करके देखो, अच्छा ये ऐसा है, हाँ तो मैं कुछ ऐसा कर दूँ तो क्या होगा, ओ ओके, अच्छा ये एरर दे रहा है, फिर मैं इसको यहाँ पर भी डबल कोट्स डाल के देखता हूँ क्या होगा, अच्छा नहीं एरर है, चलो डबल कोट्स चलता है, सिंगल कोट्स, दिस इज हाउ यू विल लर्न, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल लर्न, so let's quickly revise this and close this call, close this today's meeting, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव लर्नड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा था, कल मैंने एक इमेज भी शेयर किया था, आई थिंक ग्रुप पे नहीं शेयर किया रहेगा, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज क्लास और व्हाट इज इट्स मेथड, ठीक है। so I will share that image also there and यहाँ पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, कहीं पे शायद यहाँ पे शेयर नहीं कर, anyway, so how to define a class like this, class equals to this, कार मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रहता है इंजन, व्हील्स, बॉडी, these are objects, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करा था ये, तो there is this company, उसका नाम है BMW, लाइक BMT कर देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर उनके शॉप्स होते हैं, फर्स्ट एक इंजन शॉप रहेगा, देन व्हील शॉप रहेगा, ठीक है, इंजन शॉप रहेगा, व्हील शॉप रहेगा, देन बॉडी शॉप रहेगा, then there will be some working in the engine, then there will be some working in the wheel shop, then there is working in the body shop. So in engine, the like engine is created, in wheels are created, and in body are created. If you want to know what is happening in my engine, you have to say car manufacturer dot engine. So if you say this car manufacturer dot engine, you will get whatever is happening in the engine, okay. Similarly, car manufacturer dot body, you will get whatever happening in the body and in the wheels, okay. The second thing we have seen, similarly for net banking, तो नेट बैंकिंग में क्या रहेगा, यूजर डिटेल्स रहेगी, ट्रांजैक्शन रजिस्टर, if you want to know what is happening in the user details, you just have to say net banking को net banking object में store कर दिया, then net banking dot user details, you get all the details, okay, you get all the details. If you want the payments, you can say net banking dot payment, you'll get whatever the happening in the payment, you'll get those things, okay. Then we have learned there are 4 pillars of hooks. First is encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. Okay. And then we have seen the self. Self is used to bind the methods to the class. कैसे? Like the self. तो अभी ये bind होगा इस class से, ठीक है, class से. Then like self, जब भी class define करोगे, self is mandatory to write, ठीक है. इधर init function लिखो नहीं लिखो,
doesn't matter. ठीक है. After that, like initialization is something. Initialization तब बोलता हूँ initialization जब अपन बात करते हैं. So now I've added some parameters here. Some parameters here. So yesterday we have not seen these parameters. So if I want to know, तो मैंने first क्या किया, class mathematics, इसके अंदर एक addition का function define करा, उसके अंदर I have added these default variables, ठीक है. And I just said a plus b, so ये a plus b का addition हो जाएगा. I said I j, these are positional variables, इन दोनों का subtraction हो जाएगा. But I have to pass some values in the subtract method, ठीक है. And then there is this multiplication. Again, I have to pass some variable in the multiplication. ठीक है. So we have seen these examples. Mathematics dot addition उसके अंदर pass कर दिया, subtraction में pass कर दिया, multiplication pass कर दिया, and these are the outputs. ठीक है. Then इसको skip कर दो. Then this, जिसमें what I have seen is what we have seen this instance variable. ये नई चीज हमने यहाँ पर सीखी. इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है. इसमें क्या होगा कि यू स्पेसिफाई सम वेरिएबल लाइक दिस सेल्फ डॉट सम वेरिएबल इज इक्वल टू दैट वेरिएबल. ठीक है. सो व्हेनेवर यू ऐड यू कॉल दिस मेथड, तो ये वेरिएबल्स रेफर करे जाएंगे. नाउ दीज वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड एनीवेयर. ठीक है. वन मोर थिंग, अगर मैं ये चीज यहाँ पर लिखता नीचे और ये मल्टीप्लिकेशन ऊपर लिखता तो आई वुड हैव गॉट एरर, बिकॉज ये पहले डिफाइन होनी चाहिए. ठीक है. इंस्टेंस वेरिएबल शुड बी डिफाइंड अर्लियर. ठीक है. नाउ दिस self dot a has been used here in the multiplication and in the again multiplication. One more thing that we have seen is called as global variable. उसी को class variable भी कहा जाता है, जिसको you can use this variable anywhere in the code. So like you can see here हमने use कर रहा है, then we have used here also, but the key is you have to use this self. Why? Because this will also bind these variables to the class. Yeah, to the class. So self is the keyword to keep. Self is the word which is used to bind the methods or variables to the class. Okay, methods or variables to the class. Sorry. Then we have seen this class constructor, which is init. Okay, underscore underscore init underscore underscore is a constructor in Python. इसकी तरह और भी constructor हम है लाइक पाइथन में. ठीक है. बी कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर्स हैं. ठीक है. सो और ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में. तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन पाइथन? तो यू हैव टू से इनिट, और वो एक क्वेश्चन भी देंगे कि राइट अ मेथड और राइट अ क्लास यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर. ठीक है. अनदर थिंग, इट इज इनिशियलाइज्ड व्हेन क्लास इज इनिशियलाइज्ड. ठीक है. सो व्हेनेवर आई राइट लाइक दिस car object equals to car, this is called as initialization. Yeah. This is called as initialization. Initializing the object of a class. ठीक है. Initialization, इसी को initialize कहते हैं. Whenever you initialize this, for example here, तो ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा. ठीक है. जब भी क्लास इनिशियलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा. ठीक है. ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा. तो हियर दिस इज द नॉर्मल क्लास जिसमें इनिट फंक्शन नहीं है, जिसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है. व्हाट इज हियर, लाइक इंजन डायरेक्टली हमने डिफाइन कर दिया. इंजन के अंदर इंजन टाइप भी डाल दिया. सो इन ऑर्डर टू गेट द इंजन टाइप आई हैव टू ऐड द इंजन्स वैल्यू इन द मेथड इटसेल्फ. ये मेथड में ऐड करेंगे, इस फंक्शन में ऐड करेंगे. ठीक है. बट here what I have done is I wanted to pass in the class itself. ठीक है. class itself, जो class define करा ना इसमें. so that is why I have defined this init function. ठीक है. init function कैसे लिखा जाता है? def init self whatever the variables you are going to pass in the class. तो engine type मैंने variable ऐड कर दिया, self engine type equals to engine type. ये सेम है, self a equals to a के टाइप.
ठीक है। सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू ए, सेल्फ डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन टाइप। ठीक है, सेल्फ डॉट इंजन इक्वल्स टू इंजन टाइप। So ये whatever value I pass in the class, first it will go here, then it will go here, it will go here, and then you can use it anywhere. ठीक है, you can use it anywhere. And above the examples are similar. ठीक है, आगे की सारी examples same ही है। ठीक है, so that is all for today guys, that is all for today. If there are any slight doubt we can discuss, otherwise we can close this call. If there is a question, type question QQE and you can directly type your question guys. If there is any question, type question, type your question quickly, we will close this. अगर question है तो बोल दो। Is there any question? Is there any question? Is there any question? Is there any question? And if there is no question and you have understood most of the thing, type a win in the comments guys. If there is no such a question, type a win in the comments. Win, great win, win. बहुत सही समझ में आ रहा है। Win some more wins. Great. All right. So that is for today. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Any questions? No questions. No questions. No questions. Waiting for a minute. अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, लाइक जो यूट्यूब पे लाइव देख रहा है उनके लिए, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टाइप इन द कमेंट्स। So for those who are on YouTube, so हम डेली 8 से 9, लाइक फ्रॉम 8 AM to 9 AM क्लास रखते हैं जिसमें आई एम कवरिंग दिस पाइथन एंटायरली। ठीक है, पाइथन एंटायरली पाइथन। और यहाँ से आप देख सकते हो अभी पाइथन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसके सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो हमने चैनल पे डाल दिए हैं। उसके बाद हम सीखेंगे एसक्यूएल सीखेंगे, देन मशीन लर्निंग सीखेंगे, देन डीप लर्निंग सीखेंगे, एनएलपी सीखेंगे, डेटाबेस भी सीखेंगे। ठीक है, डेटाबेस भी सीखेंगे, क्लाउड भी सीखेंगे, लाइक कुछ इस तरीके से ही सीक्वेंस रहेगा। फिर एसक्यूएल, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, देन डेटाबेस, क्लाउड। एंड उसके बाद हम सीखेंगे जेन एआई, जेन एआई, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में हम सारी, लाइक इसका अलग से चैप्टर रहेगा। उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रहेगा, फाइन ट्यूनिंग रहेगा उसके बाद रैग रहेगा, एजेंटिक रैग रहेगा, एंड ऑल द एडवांस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू लर्न ऑल दीज थिंग्स गाइस, ये सारी चीजें सीखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस चैनल ऑल्सो। ठीक है, लाइक दिस वीडियो सो दैट, और डेली लाइक इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना so that you will get the notification। एंड जिसको ऐड करना है, जिसको ग्रुप में ऐड होना है, हमारा ये डेटा साइंस का ग्रुप है, दिस ग्रुप। तो हियर आई शेयर ऑन अ डेली बेसिस रिकॉर्डिंग्स एंड नोट्स, असाइनमेंट्स भी यहीं पे शेयर करी जाती है, यू कैन सी असाइनमेंट्स। ठीक है, सो यू कैन join this। so let me just share the link, invite group link, copy link। तो इसको मैं आपको कैसे शेयर करूँ, आई विल जस्ट ड्रॉप दिस इन द कमेंट्स। पता नहीं ये कमेंट में शेयर हो गए।
So just copy this link. I don't know if this link you will get or not. Sometimes YouTube बैन कर देता है ये link. या फिर comments में अभी comments active नहीं होगी. Just like this, subscribe और ये bell icon दबा दो. Coding how to join WhatsApp channel. Yes, मैंने ये लिंक आया नहीं है guys. लिंक नहीं आ रहा है. हाँ कैसे कैसे कहाँ पर डाल दूँ मैं लिंक. So once this video is closed, एक मैं open this and इस वीडियो का इस लाइव का जो भी फर्स्ट जो रील है ठीक है फर्स्ट रील के कमेंट में आई एम ड्रॉपिंग दिस चैनल का लिंक कमेंट्स ओपन हो जाएगा कमेंट्स में आई एम ड्रॉपिंग दिस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ठीक है आई गेस यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो ज्वाइन दिस ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है ठीक है so you will get all the notification like ग्रुप पे तो क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं सारी चीजें ठीक है and see you in the tomorrow's lecture because those who are showing love thank you very much and see you in the tomorrow's lecture so bye bye take care guys stay learn every day ठीक करो मिलते हैं